सो हेलो फ्रेंड्स, यू नो डैट आई कवर्ड, मतलब कि हम लोग ने क्या क्या देख लिया है। मैंने सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म का एक्सीलरेशन एनालिसिस, वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, यू गॉट इट। एंड आई मतलब कि मैंने बता दिया है कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू फाइंड विथ अ वेक्टर मेथड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी आप वेक्टर मेथड से फाइंड करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कैन फाइंड। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी, आई थिंक यू कैन फाइंड। सो गिव मी जस्ट वन आइडिया, हाउ कैन यू फाइंड। और मैं आपको बता देता हूँ कैसे, मतलब कि यू कैन फाइंड दैट। सो लुक एट हियर, this type was in previous video, this type was question, and question was that this was 10 radian per second, this was 80 centimeter, this was sorry, this was 20 centimeter, and this was 80 centimeter. This angle was 10 degree and this angle was 45 degree. So I am giving you just a brief idea actually. So look at here. So this point is A, this point is B, okay, and this point is C. We have to find the velocity of the C. मैंने क्या किया है कि एक्सीलरेशन एनालिसिस से आई टोल्ड यू हाउ कैन यू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ सी। एक्चुअली पिछले बार में यहाँ पर वो भी दिया हुआ है, सो अल्फा भी दिया हुआ था, बट इन वेलोसिटी एनालिसिस नीड नॉट मैटर व्हाट अल्फा इज गिवन. सो लुक एट हियर, velocity of b equal to velocity of a plus velocity of b with respect to a. तो velocity of a equal to 0, so velocity of b equal to omega 2 cross r2. So you can write omega r n cap, and n cap direction will be in this direction, okay, perpendicular to the AB link. ठीक है, this is your n cap direction. Okay, now again you can write velocity of c equal to velocity of b plus velocity of c with respect to b. Am I right? So you got the velocity of c. So velocity of c equal to velocity of just minute, velocity of c, you know that it will be plus minus any one direction. So you know that in my previous video I founded that the velocity of direction will be in this direction, because you know that omega is in this direction, that means velocity will be in this direction. Velocity of c will be in this direction only, and velocity of c will be in this direction. Why? Because piston only slide along the x-axis. So you can write bc minus I cap, okay, in vectorial form. Well, vector b, you know that omega r, or this will be the n cap. Am I right? Okay, now you have to tell me velocity of c with respect to b. So you can write omega 3 cross r3. Velocity of c with respect to b, that means you have to fix b, and look at c. Suppose omega direction is in this direction. I don't know omega direction actually in present time. Okay, so okay, look here, if omega direction is in this direction, so omega 3 cross r3 direction will be in this cap direction. So suppose this is n2 cap direction and this is n3 cap direction. So you can write omega r n2 cap direction plus omega 2 r2 n2 cap direction. Actually omega 2 r2 should be there, because this is the link 2, this is the link 3. Suppose this link is 2 3 and this link is 2, so omega 2 r2 n2 cap and omega 3 r3 n3 cap, and velocity of c equal to minus I cap. So if your assumption is wrong in this direction, so it will come as a negative. I mean direction will change actually. So draw the, you know that vector a plus vector b equal to vector c. So omega 2 r2 n2 cap, omega 2 r2 n2 cap direction. So this is the your omega 2 r2 in direction of n2. ठीक है, omega 3 r3 n3 cap, omega 3 r3 n3 cap. First you draw the omega velocity of c. ठीक है, velocity of c पहले आप ड्रॉ कीजिए. Actually if you don't know, suppose velocity of c also, so you know that velocity of c will be in this direction. Am I right? Velocity of c will be in this direction. बस हॉरिजेंटल में होगा, आपको मतलब कि सेंस पता है, लेकिन एक्चुअल में जो डायरेक्शन है वो नहीं पता है. सो विल बी इन दिस डायरेक्शन.
okay, plus I cap या minus I cap. Now you know that velocity vector this is the vector C. So vector A plus vector B. B is n3 cap direction. So B is n3 cap direction. This is the n3 cap direction. So this is the vector omega 3 n3 n3 cap. ठीक है. This is the vector A plus vector B. This is the vector B equal to vector C. That means vector BC. Okay. So you got all these things. Am I right? Now this is the length of vector B, velocity of B. This is the length of omega 3 cross R3. Am I right? This is the omega 3 cross R3 actually. So omega 3 cross R3, or you can say velocity of C with respect to B. Am I right? Now you know that this angle is how much? This angle, tell me. Okay, you can find this angle from here. This is the in n2 cap direction. So n2 cap direction you can find very easily. This is the angle 45 degree. This angle is a 45 degree. So also will be this angle 45 degree. That means with the x axis and n2 cap direction is making with 45 degree. This angle will be 45 degree. Am I right? If this angle will be 45 degree, so tell me first what will be this angle? Look at here. This is the n3 cap direction. So n3 cap direction is this, and you know that this angle is 10 degree. So this angle will be this angle is 90 degree. So with horizontal, this is making 90 plus 10 100 degree, and this angle will be, tell me, 80 degree. Am I right? टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. एंड दिस एंगल ऑनली ऑन कितना है? 90 डिग्री है. सो टोटल 180 होना चाहिए. तो दैट मीन्स दिस एंगल इज 80 डिग्री. एंड अगेन यू कैन फाइंड दिस एंगल ऑल्सो. सो 80 प्लस 45, 180 माइनस आंसर 55 एंगल. ठीक है. 55 डिग्री यू हैव फाउंडेड एट 55 डिग्री. Look at here. You know that omega 2 r2. Forget the vector sign. Okay. Forget the vector sign. ठीक है. So you know that omega 2 r2. Omega 2 you know that 10 was there, and r2 you know that r2 was 0.2. So look at here 20 कर लेते हैं. तो ये जाएगा आपका 200 हो जाएगा. सेंटीमीटर में ही रख लेते हैं. ये आपका 200 हो जाएगा. ठीक है. ये आपको लेंथ पता चल गया. अब आप कैसे पता कर सकते हैं अदर लेंथ? वेलोसिटी ऑफ सी कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, वेलोसिटी ऑफ सी डिवाइडेड बाय साइन 55 इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय साइन 80. नाउ यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर वेलोसिटी ऑफ सी. सो 200 डिवाइडेड बाय साइन 80 इंटू साइन 55. So 166 velocity of C equal to coming 166.35 centimeter per second. You have remember it, I think. I don't know you remember you can remind it or not. You मतलब हम लोग जब उधर ही फाइंड किए थे तो velocity of C 166.35 centimeter per second आया था. Now you can find omega 3 r3. So how can you find omega 3 r3? Look at here. Omega 3 r3. Am I right? Omega 3 r3 divided by sin 45 equal to anyone you can take. चलो omega 2 r2. Now you know that कि velocity of c कितना आ गया है? 160.6.3. दैट मीन यही आप ले लीजिए. तो 166.3 डिवाइडेड बाई sin 55 actually, sin 55. So now you can find it divided by sin 55 into sin 45. Omega r3 you know that 80 centimeter divided by 80. Now we are getting omega 3 is 1.79 रेडियन पर सेकेंड. पिछले वीडियो में भी हम लोग जब आई सेंटर मेथड सॉल्व किए थे तो ऑल दीज थिंग्स वाज सेम वाज कमिंग एक्चुअली. सो ओके, थैंक यू. अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हाउ कैन यू फाइंड एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी एनालिसिस, हाउ एनालिटिकली ऑफ सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म, बट देयर विल नॉट विल बी एक्चुअली अल्फा. ओके,
मतलब ये जो क्रैंक होगा कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से वो क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, नॉट मतलब कि सॉरी कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन आई एम टेलिंग यू, एक्चुअली दिस इज मतलब गलत बता रहा हूँ मैं, नॉट विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, विथ जीरो एंगुलर एक्सीलरेशन। ओमेगा 2 will be constant, actually there will be no angular acceleration. If there is the angular acceleration, that means you have to find with the vector method, vector analysis or graphical method. You can solve acceleration analysis with eye center method. Okay, thank you.